Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. Please switch on your videos. Karthik, Himanshu. Yes, Yeah, okay, Mayank has done it now. Himanshu, Simran, Simran, please switch on your video. Nishant, okay. Ajay, please switch on your video. We will get started, okay? So today we will do, yesterday we revised a bit of trigonometry. So आज हम क्या करेंगे? Circles and areas related to circles का revision करेंगे. Okay? So let's get started. Prove that the lengths of tangents drawn from an external point to a circle are equal. Okay? So let me quickly draw a circle. And there is an external point P and we have lines. The lines may not be very straight, and there is the center O. Okay, सर RHS रूल से हो जाएगा. वेरी गुड, RHS से ये हो जाएगा. ठीक है, तो कैसे करेंगे हम इसको? ये वाला एक प्रूफ जो है वो हम लिख के करते हैं, और कुछ आगे के प्रूफ जो है, सिंपल प्रूफ जो होंगे वो हम केवल बोल के भी कर लेंगे टू सेव टाइम. तो अब हम कैसे, लेट्स स्टार्ट. वी हैव टू प्रूव, टू प्रूव. व्हाट इज टू प्रूव? AP AP is equal to टू BP. BP. ओके, ये हमें प्रूफ करना है. प्रूफ लिखते हैं. गिवन वगैरह मैं नहीं लिख रहा हूं. ठीक है, प्रूफ कैसे होगा? लेट्स गेट स्टार्टेड. OA is equal to OB. Reason is radii Radii. of a circle. Okay, now the next is OP is equal to OP, which is common, and angle PAO is equal to angle PBO. PBO is equal to 90 degree. Okay, angle of a tangent with radius. Okay, now we can say that the two triangles, which are, let's say, POA, triangle POA, and the other triangle will be PO. Good afternoon, sir. Good afternoon. Okay, they are congruent, and as you have already said, it is the RHS rule. Now we can go ahead and say that AP is equal to BP CPCT. ठीक है, तो this was a fairly easy proof, but we just did it completely to also remember the steps of writing the proof. Okay, let's move on. Find the area, shaded area. We have to find the
shaded area, all these are arcs of a circle which have been drawn with the radius which is half the side of the square. ठीक है? So area of the square minus area of circle. yes, area of the square minus these areas. Okay, now these areas are, this is quarter of a circle, this is quarter of a circle, this is all are quarters, right? So in total this is a area of a circle with radius half of the side of the square. ठीक है? तो जो स्क्वायर है वो है 12 साइड का, तो ये रेडियस जो है वो 6 है, right? So area of the square, which is 12 square, minus area of the circle with radius 6, which is pi. Pi is 3.14 into. सर एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ रहा है 30.96 सेंटीमीटर. Okay. Okay, very good. Now we will have, we can take 36 outside, we will get a 4 minus 3.14. So this will become 36 into 0.86, right? We have to solve this, which you have done, and the answer is 30.96 centimeters. Okay. If the angle between two tangents drawn from a external point P to a circle of radius A and center O is 60 degrees, then find the length OP. ठीक है? तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चंस में we should sketch. So let me sketch. Now the center is O and the radius is A, that we should remember, and the angle between the two tangents from an external point. Okay, so this angle is 60 degree. We have to find the length OP. This length we have. 120. How will we do this? Obviously, in such questions, first we should complete with the radius and the 90 degree. Now, how will we do this? Okay, तो देखिए ये जो we remember, we don't have to prove in this question anything, right? So but we should know certain things. These are congruent triangles, right? अभी हमने थोड़ी देर पहले प्रूव भी किया था. ये अगर 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री है, right? ओके, और ये एक हमारा क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है, जिसमें ये जो लेंथ है ये तो A है और ये एंगल जो है 30 डिग्री है. हमें निकालना है ये हाइपोटेन्यूज. So we can use the sine. Sine of 30 degrees is equal to A by H, and H is equal to A by sine 30 degrees. What is sine of 30 degrees? So 1/2. Half. So it is 2A is the answer. Okay, got this? So this question uses trigonometry also. सर सिर्फ यहीं तक करना है. यही, हाँ मैम, लेंथ ऑफ ओपी निकालना है ना बस.
Varsha, if you're saying something, you are on mute. What was your question yahin tak karna? I didn't understand that. We have to find OP. मतलब सेंटीमीटर में उसकी लेंथ निकालनी है. हाँ, नहीं हम सेंटीमीटर्स में नहीं निकाल पाएंगे. रेडियस a दिया गया है. It's a constant value given. We can't, it will not be a numeral answer. We have to express in terms of a only. Okay, units भी नहीं दी गई हैं, तो हम 2a सेंटीमीटर भी नहीं लिख सकते आगे, क्योंकि यहाँ पे भी यूनिट नहीं दी ना, हमें पता नहीं है वो मीटर है, सेंटीमीटर है, फीट है, हमें नहीं पता. Okay, so whatever is the unit of a will remain the unit here, so we don't have to express the unit. Okay, but if you want to express, you can say 2a units. Okay, that is fine. But if you don't write this here, it doesn't make a difference, because the unit will come with a. Okay, लेकिन अगर हम एरिया निकालते तो यूनिट स्क्वायर लिख देते टू टेल कि द यूनिट इज द स्क्वायर ऑफ द यूनिट ऑफ ए. Okay, prove that the tangents drawn at the end point of a chord of a circle make equal angles with the chord. ठीक है, again let us very quickly sketch it to understand what we have to prove. We have a chord and we have the two tangents at the end of the chord, right? So what do we have to prove? A, this is A, B, and this is B. So to prove, what is to prove here? That angle PAB is same as angle PBA. ये प्रूव करना है हमको यहाँ पर. अंडरस्टूड? तो कैसे करेंगे इसको प्रूव? So we तो know ये that OP को वो करेंगे बाइसेक्टर. I couldn't understand what you said. You have to say it again. The voice wasn't clear at all. so PB is equal to PA and the given angles are the opposite of these Very sides. good. Okay, so PA is equal to PB. Why? Tangents, it's a theorem, right? Tangents from a point to a circle are equal. Okay, so this is a theorem. So we can directly say this, and then we can say angle PAB is equal to angle PBA. Angles opposite So equal sides of a triangle. equal sides are equal. Okay, so it is such a easy proof. Okay, but थोड़ा सा क्वेश्चन को इंग्लिश से फिगर में ट्रांसलेट करने में थोड़ा सा समय लग सकता है. ओके, अगर किसी स्टूडेंट को भी डाउट है हमने कोई चीज कैसे की है, तो डोंट बी शाय, प्लीज आस्क. A circle touches all the four sides of a quadrilateral ABCD. Prove that AB plus CD, okay, AB plus CD or sum of opposite sides are equal. That is what we have to prove.
How will we do this? सर हम इक्वेशन बना लेंगे So टेंजेंट first of all, we would make The 4 tangents parts. equal, okay, then we form the equation that AP is equals to AS, Very and good. then add the equation with the similar term. Very good. उन्होंने ऐड Very good, Ramza. Okay. So हम इसको ऑब्वियसली हम लिख सकते हैं AS इज इक्वल टू AP, ऐसे करके हम सबको लिख सकते हैं. Then we add the corresponding equations to arrive at this. Okay, just to make life simpler, I will just the tangent coming from A I will call as A and A, both are of the same length. Coming from B I will call as B and B. Coming from C I will call C and C. Coming from D as D and D, just to make life easier, right? So then the LHS will become AB. What is AB? AB is A plus B plus CD. CD is C plus D. Okay, now I can write it as B plus C plus D plus A, right? I just rearrange the terms. Now what is B plus C? Okay, B plus C is BC. And what is D plus A is AD. Yeah, DA. I will write it as DA. Okay, which is equal to right hand side. Okay, so this way you can do it in a neat way. Otherwise, you can also do it by writing AS is equal to AP and so on. You will have 4 equations. Just rearrange them and add them up to get the left hand side and then the right hand side. Okay, both are fine ways of doing it. 3 semicircles, each of diameters 3 centimeter, a circle of diameter 4.5 centimeter, and a semicircle of radius 4.5 centimeter are drawn in the given figure. ठीक है, तो ये diameter 3 centimeter है, ये 3 centimeter है, और ये भी 3 centimeter diameter के साथ है. तो ये total कितना हो गया? 9 हो गया. तो ये बड़े वाला जो है 9 सेंटीमीटर डायमीटर या 4.5 सेंटीमीटर रेडियस के साथ है, राइट? और द वन इन द सेंटर, दिस बिग सर्कल इज विद द रेडियस डायमीटर 4.5. दिस इज विद 4.5 डायमीटर. ओके, तो हमें ये शेडेड पार्ट निकालना है. ओके, it's a straightforward question, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें, right? So what we will do is we will take the area of this semicircle, we will add the area of this semicircle minus 3 minus the bigger circle, and then from this minus the area of 2 semicircles and 1 of the full circle. right? So area is equal to area of big semicircle plus area of small semicircle plus minus 2 into area of a small semicircle minus area of medium semicircle. ओके, आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है इस तरीके से, ये मैं आपको केवल एक्सप्लेन करने के लिए लिख रहा हूँ, राइट? एग्जाम में आप डायरेक्टली उनके वैल्यूज लिखना शुरू कर सकते हैं. ठीक है, तो अब ये पहला एरिया ऑफ द बिग सेमी सर्कल. एक्चुअली क्या होगा, ये एरिया ऑफ स्मॉल सेमी सर्कल माइनस, ये तो केवल एक ही सिंगल माइनस रह जाएगा यहाँ पे, राइट? So we will make that simplification. What is the area of the big semicircle? तो big semicircle का radius है 4.5, right? So it will be pi, तो हम बाहर ले लेते हैं क्योंकि सभी में आएगा, pi r square by 2, 4.5 squared by 2. Now minus
I'll just add these two things together. So it will be the area of the small semicircle, which is, what is the radius of this? 1.5. So 1.5 square by 2. One semicircle को subtract किया. And the full circle here. इसका radius क्या है? 4.5 by 2. का whole square. Right? Fine. So now what will we get here? So this will be 4.5 square. 5 square 2 minus 4.5 square by 4. So this will become 4.5 square by 4 minus 1.5 square by 2. Okay. Now I can take pi, which is, we'll see what value of pi to take. Lovely. He has not told me. 1.5 square by 4. So we will get 4 minus, sorry, 9 minus, right? Okay. So we will take 22 by 7. Excuse me, 2.25. sir. Huh? Yeah. So what is the radius of big semicircle? Radius of this one. You're saying The big this? semicircle. Big circle का radius is 4.5 सेंटीमीटर. ये 4.5 है यहाँ से यहाँ तक. Sir, you have written 4.5 by 2, so I couldn't understand that. Because it's a semicircle. I have written 4.5 squared pi r square by 2 because it's a By 2. semicircle, Okay, sir, thank you. right? So we will get 11 into 2.25 by 2. Okay. So this is हमारा आंसर आ रहा है 689 upon 56 centimeters square. 89. 689. 689 नहीं, इतना बड़ा नंबर नहीं आ रहा है ना. नंबर आ रहा है 11 into 2.25 by 2, which this will become 1.125, right? So 1.125 into 11, this a number will be close between 12 and 13, right? See, I just used the distributive property here to make the calculations a little bit simpler for me, right? Did you understand what I did here? Sometimes in mensuration questions, okay, these kind of taking the common factors out is very helpful. So यहाँ पे मैंने 4.5 का स्क्वायर नहीं निकाला. I wrote 4.5 as 1.5 into 3, right? 4.5 is 1.5 into 3. That way I could take 1.5 square outside, leaving only 3 square here, which is 9. Okay, so if you practice doing questions like this, your calculations will be a little bit easier. Everybody is getting a number like what I have got here. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so now 1125, 1125, not easy to do mentally for me, so I will have to take the help of this. 12.375 centimeter square. Okay. You're getting the same number?
The question is easy. I mean, there is no reason that somebody will struggle in figuring out how to do the question. But calculations में किसी से भी इसमें mistake हो सकती है. Now the question I want to ask you here is कि see, most important thing in board exam, once you know how to solve the question, you should ensure that you get full marks for that question. ठीक है ना, क्योंकि आते हुए क्वेश्चन के मार्क्स हमारे नहीं जाने चाहिए किसी भी कीमत पर. तो अब हमने इतनी मेहनत करके क्वेश्चन सॉल्व कर लिया. हाँ बोलिए. हमारा भी तो यही आया था 689/56. अगर 56 से डिवाइड करेंगे तो यही आएगा 12.375. अच्छा, which is very good. मैंने I didn't possibly listen the by part in the end. Okay, तो मुझे लगा you got a very big number. Okay, तो अब हमारा ये नंबर आ गया है. आपको एग्जाम में ये चेक करना है कि क्या ये मेरा आंसर करेक्ट है. हाउ विल यू गो अबाउट चेकिंग? एक तो यू विल डू अ रिवीजन ऑफ द वर्किंग, राइट? वो तो आप जरूर करेंगे, लेकिन उसके अलावा कोई और तरीका है जस्ट टू, बिकॉज वो रिवीजन में कई बार क्या होता है, वही मिस्टेक जो पहले की थी दोबारा वही कर बैठते हैं, राइट? तो कुछ आप मुझे तरीके बताइए जिससे आप ये चेक करेंगे कि हमारा उत्तर सही होने के चांसेस बहुत हाई हैं. ऐसा आप क्या करेंगे? यहां जो भी टफ कैलकुलेशन के क्वेश्चंस होते हैं उनमें हमें कुछ सोच के करना चाहिए कि ताकि हम अपने आंसर को सही कर सकें. कैसे चेक करेंगे बताइए? Sir, what? How will you check your answer? देखिए, एक बात होती है कि हमें अपने क्वेश्चंस को चेक करना आना चाहिए एग्जाम में, ताकि हमारे सिली मिस्टेक्स के लिए मार्क्स ना जाएं. बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है मैथ्स में, राइट? जैसे अगर आपने डिवीजन किया तो आप मल्टीप्लिकेशन से वेरीफाई कर सकते हैं उसको, राइट? डिविजिबिलिटी चेक से कई बार चेक कर सकते हैं कि आंसर. It may not be a perfect way to check, but it should give you some idea. तो देखिए, इसमें ना एक चीज आप आराम से कर सकते हैं. इतनी हमने कैलकुलेशंस की, लेकिन अगर आप इस फिगर को देखें तो आप ये समझ जाएंगे कि ये वाला तो यहां जुड़ जाएगा पीस वापस. तो इसमें इस सेमी सर्कल में से एक ये वाला सेमी सर्कल निकल गया, एक ये वाला सेमी सर्कल निकल गया, राइट? ये फुल सर्कल निकल गया, ये सेमी सर्कल निकल गया. तो अलग से केवल इसके एरिया का रफ एस्टिमेट ले लेते हैं. रफ लेना है तो क्या होगा, ये 4.5 इसका रेडियस है, उसको हम 4 या 5 ले लेते हैं. तो मान लीजिए हमने इसको 5 ले लिया, तो कितना इसका एरिया आएगा? पाई आर स्क्वायर बाय 2. पाई को 3 ले लेते हैं, इंटू 25/2. राइट? पाई आर स्क्वायर बाय 2 ये आना चाहिए. ये तो हमारा इस पूरे का आएगा एरिया. उसमें से इसी तरह से हम इसका भी एरिया का एस्टिमेट ले लेते हैं. ठीक है, वो क्या आएगा हमें? पाई आर स्क्वायर ये है, इसको मान लीजिए हमने रफली 4 ले लेते हैं तो 2 रह जाएगा ये, राइट? तो और इसको हमने 3 ले लिया तो 3 इंटू 2 ये 12 आ गया पाई आर स्क्वायर. और ये जो है इससे इसी तरह से इसका भी ले लेंगे, राइट? एंड वी विल ट्राई टू गेट अ रफ नंबर. ओके, और उस रफ नंबर को, जो कैलकुलेशंस बहुत इजी है, we will just compare it with this. If it is so, we will not make a big mistake because of that. We will, let's say we were supposed to get an answer which is 26 and we are getting 12.37. We will not make that mistake then. Okay, so जहां पे complex calculations होते हैं थोड़े, वहां पे आप
रफ में उनके अप्रोक्सीमेट नंबर्स लेकर कैलकुलेशन करके ऑर्डर को चेक कर लीजिए कि हमारा आंसर उस ऑर्डर में एटलीस्ट है या नहीं। गॉट इट? ओके, लेट्स कंटिन्यू विद मोर क्वेश्चंस। एक्सक्यूज मी, सब बच्चे अपना कैमरा ऑन रखेंगे। स्टूडेंट्स, स्विच ऑन योर कैमरास। मुकुल, निशांत, तनिषा, रमजा, अजय कसाना, अरुण कौशिक, दीपांशु राज, दिव्यांशु राज, निशांत कसाना, डू इट फास्ट। तनिषा शर्मा, तनिष शर्मा, मयंक, ओके। संध्या, वेर इज संध्या? सिमरन, सिमरन, Ajay, your video is still not on. अक्षरा, अक्षरा गोयल, अक्षरा गोयल, अक्षरा गोयल, बेटा ऑफ ही मत करिए ना उसको, बीच में ऑफ ही क्यों करते हैं आप? ठीक है। इन द गिवन फिगर xy and x prime y prime are two parallel tangents to a circle with center O and another tangent AB with मुकुल, point of contact C is intersecting xy at A and x dash y dash or x prime y prime at B. Prove that angle AOB, okay, this angle is 90 degree. ये prove करना है. This is to prove. सर इसमें हम एंगल AOP और सॉरी ट्रायंगल AOP और एंगल AOC को RHS रूल से कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके एंगल AOP इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल AOC एंड सिमिलर टू ऐसे एंगल BOC और BOQ में हो जाएगा, दोनों सिमिलर हो जाएंगे। फिर एंगल AOP प्लस एंगल AOC प्लस एंगल BOC प्लस एंगल BOQ इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा लीनियर Very good, right? So हमको क्या करना है, just so that everybody understands, ये वाला जो triangle है, ठीक है, ये these are tangents from the external point वाला केस है ये, ठीक है ना। देखिए केवल इस पार्ट को देखिए, these are the tangents from A। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं ये कॉन्ग्रुएंट है। ऑब्वियसली हम ऐसा लिख नहीं सकते हैं डायरेक्ट, वी हैव टू प्रूव इट यूजिंग आरएचएस, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूं क्योंकि हमने अभी अभी किया था, लेकिन एग्जाम में आपको ये प्रूव करना है, दैट इज नॉट अ थियरम, ओके। तो ये हमें प्रूव करना है कि ये वाला ट्राइंगल एओपी और एओसी कॉन्ग्रुएंट है, उससे हम सीपीसीटी से ये दोनों एंगल प्रूव कर देंगे इक्वल है। Similarly, we will look at this case, okay, which are the tangents coming from B. Again, like we did in that question, we will prove these two triangles are congruent using the RHS property, and with that we will be able to prove this angle is equal to this, right? So then what we can show is add this, and this, all of them together to get 180 degree. They are, because the reason you will give is POQ is a straight line. Okay, matlab linear pair is not the word we can use because they are four angles. Okay, so हम word वो use linear नहीं pair करेंगे, exams. तो हम वो वर्ड नहीं यूज करेंगे, लेकिन जो बोला तुमने प्रियांशी बिल्कुल ठीक है। सो वी विल जस्ट राइट एंगल POP AOP plus AOC plus angle COB and all of these add up to 180 degree, and then use the equalities to prove that angle AOC plus angle COB is equal to 90 degree, which is same as angle AOP. Okay, और हमारा जो है ये फाइनल आंसर आ जाएगा।
ठीक है, finally we will be able to prove sum of these two is 90 which is the same as this angle. ठीक है, so मैं लिख के नहीं कर रहा हूं ये पूरा proof, but it is one of the good questions, proper question, the kind of questions you get in board. Let's do this. Let's do this. सर ये तो आपने पहले भी करा दिया, सेम इसके जैसा ही क्वेश्चन. Just a second. हाँ, तो ये जो है this is actually the same question literally, right? So this, yeah, it is actually the same question. It has just appeared in the board a couple of more times, so I didn't check it. I copied it from 2 papers. Okay, so favorite question of the examiner. Okay, let's do this one. In the figure, from an external point P, two tangents PT and PS are drawn to a circle with center O and radius R. Okay, so radius is R. Radius is R. If OP, okay, this is 2R, OP. Show that angle OTS is equal to angle OST. तो ये दोनों एंगल हमें इक्वल प्रूव करने हैं और उसका मेजर 30 डिग्री होना चाहिए. How will we do this? बताइए. How will we approach this? So can we first prove congruency in the triangle TOP and SOP? Yes, they are congruent. We can prove that. सर इसमें हम एंगल OPT लेंगे और इसमें इसकी PT की वैल्यू निकली आएगी, पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगी. और फिर Pythagoras theorem. Why would we use the Pythagoras theorem? to find the length of TP. PT. Okay. Do we need to find that is the question. How would that help? So, but TP and TS are already equal. We know that by theorem. PT and TS, they are equal. That's a theorem. Oh, we are coming to an end of the class. But see what we can do, just to give you an idea, we can prove that this angle is equal to this angle, right? If we prove that, then the sine of this angle is 1/2, which is 30 degree. तो ये एंगल इजी है, हमें दिख ही रहा है कि ये 30 डिग्री है, because the sine is 1/2, राइट? तो इसका मतलब हमें केवल ये प्रूव करना है
कि this angle is equal to this angle.